And this Sunday, we have an interesting topic at hand. We are talking about doing masters abroad after your graduation from India, doing master's degree, higher education from foreign universities. And specifically, we'll be talking about US and Canada option for masters. So what we will do today is I'll use a PPT, and you can also get a personal copy of your PPT when we end this webinar, and I'll tell you how you can get that. So I will share my PPT with all of you, and I'll also request you to keep your view mode in the speaker mode so that you're not distracted by other participants. So this is the PPT I have, which I'll run for next, let's say, 60 minutes and talk to you about this study abroad option, which is masters. And we'll use the GRE way, writing some exams and getting into top-notch universities in US, Canada, and also applying for scholarship. So all that I will talk about: work visa, scholarship, entrance requirements, and all that. Chaliye, so let me begin it on that note. So this concept that we have, we call them as value-added lectures and workshops, which we generally conduct on Sunday mornings. The idea is to promote awareness among students, and this is largely for students and parents around the education theme, so that you guys can take important decisions when it comes to your career, when it comes to your studies, and you take these important informed decisions. वैसे तो सब कुछ Google पे available है, but at the flip side, that is the problem. Because everything is available on Google, it at times becomes so difficult to find out what is right and what best suits you. So these webinars help you give those important information so that you can decide what's good for you. This is 12th in the series this year, where we are talking about study abroad post-graduation. Like I said, invariably, every Sunday of the month, we do some or the other theme. Like last Sunday, we were talking about management after 12th. Then we talk about study abroad after 12th, law careers, career counselings, board exams. So we talk about a lot of topics every Sunday. And the idea is over the Sundays that we get over a year, we do some value-added workshops and webinars like this. You can watch out our Facebook page for upcoming webinars and events that we do on Sundays. And so that if the topic interests you, you can join us for that. Now, today's agenda, what is that I plan to cover? I'll talk about who we are and what we do. And after that, I'll quickly move on to what are the kind of degrees and disciplines which are more popular for Indians going abroad for their higher studies, which are the top 5 destinations. Among them, I'll pick 2, which is US and Canada, and we'll see what is that path like, what are various requirements, what does your timeline look like, what is the kind of visa you get, work visa kya hota hai, and so on. We'll talk about all of that. We'll talk about associated cost of study and stay and scholarship opportunities, and then how is that we can help you. So we have some programs in case you want to take our help, how we can help. Towards the end, we'll have open house where I'll take your questions and try to answer them to best of my ability. So this is what I plan to cover in today's webinar. So on this note, let me start. So it will be a good idea if you may want to write down a few things, and you can also get a PDF copy of whatever you're seeing on screen. Ye sab aapko PDF mein mil jayega. I'll share a number with you towards the end, which you can write down, note down, and you can just send a hi from your WhatsApp. In return, you will get PDF of this particular PPT that I'm using today. So who we are Universal Tutorials. Universal Tutorials founded by Mr. Anubhav Sinal way back in 1998. And like any venture, it was a humble start with 3 students. It has been 24 years since then, and we have done remarkably well, where we have coached, trained, influenced, advised more than 35,000 students over these years under various courses that we run. We have got 6 physical branch locations in Navi Mumbai, plus a pan-India online presence where we do a lot of online courses, training, advisory, university application. So ये सारा काम हम करते हैं. At UT, we have 3 areas. We have board exams, 9, 10, CBSE, ICSE.
where we help students with their board exam preparation, CBSE board and ICSE board, 9th, 10th and 12th CBSE boards. We do Indian exam preparations like NEET for medical, like IIT JEE and IPM for management and so on. And we do study abroad. So the third vertical is where I'm talking to you today from, where we do study abroad post 12th and post graduation. So we do out and out complete solutions. So we do everything here. We do training and we do university application, and we help you with all your writing requirements and applying to universities and getting visa and so on. So study abroad program, it has 3 parts. The core exams, we prepare you for exams like GRE or SAT. So GRE is for all your grad program, जिसको हम post graduation बोलते हैं, वहाँ उसको वो लोग grad बोलते हैं, तो उसके लिए हम आपको GRE exam की तैयारी कराते हैं. We do English exam preparation. So in case you're looking for studying in, let's say, US or Canada or UK or Australia, you may be required to write one of the English exams, as they are commonly called, TOEFL या फिर IELTS. So इसकी तैयारी करवाते हैं हम, and we help you with university application, shortlisting, profile mapping, letter of recommendation, essay writing, जो भी सब application में लगता है, we help you with all of that and visa. So before I begin, it will help me if you guys can help me understand what is your current academic status. So accordingly, I will, model my talk and try to be more relevant to different segments of audience that I may have today. So please select, and the poll आपके screen पे आएगा. अभी आपको कुछ नहीं करना है. So in case, and you have to pick only one option. मान लीजिए आप school या junior college में 12th तक हैं, तो pick option A. If you are in your first year of graduate studies, pick option B. Second year वाले C pick करें. If you are in your third and final year, then you can pick D. Or if you are, rather उल्टा करते हैं, if you are in your third year और आपका 4 साल का degree course है, then you should pick D. But if you are in your final year of studies, then you should pick E. So let's have that Zoom poll. ये Zoom पे आएगा, chat पे कुछ नहीं करना है. So poll is there. Please pick one choice for yourself and submit the choice. So Nilesh sir will let you know when it ends, and then we will see. Yeah. I'm ending the poll. Must have given all. Sharing the results. Okay, so this is the kind of audience that I have. There's nobody from school segment, which was understandable. I mean, which is understandable. First year, 30%. Second year, 30% of the audience. Largely, people are in their third and or fourth year and above. So, okay, that makes sense. Around 60% of the audience. Now, accordingly, I will try and be relevant to all 4 segments that we have. So people who are in their first year, this is slight early, but it's always good to know in advance. People who are in their 4th year or who have passed their 4th year or who graduate ho chuke hain, maybe they are working. In that case, I'll request you to be with me and listen me out carefully, क्योंकि आपके लिए कुछ अलग customized solutions होंगे. Some things would be relevant, and some part you need to talk to me separately, talk to us separately. Chaliye, so let's go ahead. On this note, let's start with what are the various degrees and disciplines. So when you're going for masters abroad, the common degrees that you see, if you're going abroad to study, you will see that MA is a common nomenclature. This is how degrees are called: Master of Arts, Master of Science. So let's say आपको MTech जैसा कुछ करना है, आपको engineering में आगे जाना है, you will see your degree would still be called MS or MSCs or MCA. It also depends on which country and which university you're talking about. But MS is a very, very common degree for science graduates and also for engineering students जिनको masters करना है. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए MBA और MIM, जो कि यूरोप में बहुत कॉमन है. यूरोपियन स्कूल्स would give you an MIM, so which is a master's program in management. You get your degrees.
depending on where you are studying, what you are studying, your course could be, the degree that you are doing could be course based, जिसमें number of credits पूरे करने हैं, courses लेना है, or it could be research based, जिसमें courses कम करने हैं, but कोई thesis को submit करना है, and the duration could be anywhere between 1 to 6 years. Yes, 6 साल तक का भी masters हो सकता है. So this would totally depend on which country we are talking about and which kind of university we are talking about. So let me tell you, in US and Canada, the most common duration for all the popular programs that you can think of would be 2 years. UK will offer you both kind of variants. वो आपको 1 year masters भी देंगे, और in the same course some other university may offer you 2 years masters. तो यूके में प्रोग्राम चूज करते समय बहुत ध्यान रखना है, बट कैनेडा एंड यूएस यू विल सी 24 months, 2 years का मास्टर्स जनरली होता है, बट देन इट डिपेंड्स ऑन कोर्सेज टू कोर्सेज, जनरली ये होता है. Which are the most popular discipline around the world for which you see people crossing borders and going to foreign universities? So business management, marketing, finance, data analytics, computer science and IT. So this is जो जैसा हमारे MC होता है, so mostly related to computer application courses, Internet of Things, cyber security, all these artificial intelligence, कुछ ऐसे courses. Engineering and technology, so mechanical, computer science, AI ML, all these electronics, ये सब में masters करने के लिए this is another popular course. Humanities, in case you are interested in sociology, history, geography and languages, आपको कुछ ऐसे courses में जाना है. Medicine and health, though this could be very, very costly, but this is one of the popular courses, or I should say degrees, for which students would go abroad. Law, natural sciences and mathematics, something to do with physics, chemistry, or mathematics or biology, zoology, botany, and courses like that. And others could be like hospitality is another very popular course for New Zealand, Australia. तो ऐसे बहुत सारे courses हैं जिसके लिए बच्चे generally masters करने बाहर जाते हैं. The top 5 countries or destination, and in this very order globally, you will see, Indians and Koreans and Chinese and Bangladeshis and, a lot of Asians traveling for foreign university. US. Highest number of foreign students every year entering this country into their universities. So US has maximum number of foreign students. Second comes United Kingdom. Third comes Australia, and I will talk about each of these nations in detail. इनकी क्या uniqueness है. Canada and Germany. All these 5 nations that we see, इसी order में, US से लेके Germany तक, US being the highest attractor of foreign students for higher studies, especially masters. All the way up till Germany, 5 destination है. Now let us look into the uniqueness of each destination. What do they hold, और ये अलग कैसे हैं एक दूसरे से. चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं. So the idea is मैं US Canada में ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, but here I will give you an overview of these 5 nations. So first let's talk about USA as a destination for masters. So it is the single largest, I should say, nation with highest number of top universities in the world. You look at any ranking, कोई भी थर्ड पार्टी रैंकिंग उठा के देखिए, यूएस में टॉप यूनिवर्सिटीज का नंबर सबसे ज्यादा होगा. It will have highest number of universities in terms of top rank. Tuition budget possibly to suit every pocket, I would say $15,000 से लेके $50,000 per annum तक के बजट के कोर्सेज यूनिवर्सिटीज आपको वहां ऑफर करेंगी. So you have a huge range to choose from. Excellent academic flexibility, which is very, very unique, and the kind of flexibility that United States offers rather, is like not offered by many other nations, where you can pick what kind of subjects you want to do, and you can actually do very diverse subjects. You can have philosophy with computer science, you can have fine arts with mechanical engineering. So बहुत अलग-अलग तरीके के आप courses उठा के, सब्जेक्ट्स उठा के अपना कोर्स बना सकते हैं. द मेजर एकेडमिक टर्म इन यूएस, जिसको वो फॉल बोलते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अगस्त एवरी ईयर.
So August wala start is their main term, fall term, where you will see most of the courses that is being offered. In terms of requirement, most exhaustive. सबसे ज़्यादा requirements आपको US में दिखेंगी. Where they'll ask for your college grades. आपके college grades बहुत important है उनके लिए. क्या CGPA चल रहा है आपका? They will ask for some standardized test score, जैसे GRE, GMAT, या फिर अगर मेडिकल करना है तो MCAT या लॉ करना है तो LSAT. ऐसे कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स लगेंगे. जनरली GRE सबसे ज्यादा पॉपुलर है. एक इंग्लिश टेस्ट का स्कोर लगेगा, IELTS या TOEFL, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, लॉन्ग एसेज, SOP जिसको हम बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड पोर्टफोलियो ऑफ वर्क, डिपेंडिंग अपॉन कौन से कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो. तो फेयरली एग्जॉस्टिव रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन. The good part is along with your study visa, generally वहाँ पे जो study visa मिलता है उसको F1 बोलते हैं. ये non-immigrant visa है, which is called study visa. Masters के लिए ये 24 months का depending upon your course duration ये आपको मिलेगा. Along with that, you get 1 or 3 years of work visa. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 साल का study visa मिलेगा अगर 2 साल का कोर्स है तो, and along with that you may get 1 or 3. तो 2+1 या 2+3 years का आपको वीजा मिल जाता है, जिसमें वर्क वीजा भी देखने को मिलता है, which is a great thing. You can work during your studies on campus, off campus. There are a defined number of hours, and you can actually finance your own education in a way. And then you get OPT opportunities. ये जो OPT है, ये वर्क वीजा का नाम है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. सो 1 साल या 3 साल का आपको वर्क वीजा मिलता है, कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. ये मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा. तो मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन. Coming down to UK, United Kingdom, again, UK has some top universities, Oxford and the Cambridge and London School of Economics. ऐसे कुछ top rated international ranking के universities और colleges हैं. They are comparatively expensive. UK में पढ़ना is comparatively expensive than other nations. So you'll have to look for a lot of grants or scholarships or financing options. Again, multicultural environment. Just like US, you get extra. You have those environment or campuses where students come from diverse cultural backgrounds. So that is very enriching. Mostly for subjects like humanities, social sciences, management, computers, business-related courses के लिए UK बहुत popular है. The main term starts in September. September इनका main intake होता है. Why am I talking about main term? क्योंकि इन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज यू विल सी 2 इनटेक है. हमारे इंडिया में सब कुछ जैसे जून जुलाई में भी चालू हो रहा होगा, वहां पर 2 इनटेक है, फॉल विच इज अगस्त सितंबर एंड स्प्रिंग विच इज जनवरी फरवरी. तो फॉल इनटेक सभी जगह मेन है बिकॉज यू सी वहां पे मैक्सिमम कोर्सेज मिलते हैं एंड ऑल कोर्सेज मिलते हैं. रिक्वायरमेंट्स रिलेटिवली कम है, कॉलेज ग्रेड से काम चल जाता है. नो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर एज सच आर रिक्वायर्ड or mandated. TOEFL less accepted. IELTS का score चाहिए यहाँ पे. LOR test scores depending upon the course that you are doing. They may ask you to write some course, a test. Otherwise नहीं चाहिए. You do get work permit during your studies. UK for last I think couple of years or more than couple of years now, they've become very liberal. आपको study permit, work permit और उसके आगे permanent residency के rules थोड़े से relax हुए हैं. तो स्टडी के बाद भी बहुत लंबा पीरियड आपको मिल जाता है फॉर वर्क एट यूनाइटेड किंगडम. ये भी 4-5 साल में ऐसा चेंज आया है. कमिंग डाउन टू ऑस्ट्रेलिया, सम वेरी गुड यूनिवर्सिटी, बट लेट मी ऐड, उनके जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं वही ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. दे कॉल देम एज बिग 5. अदरवाइज देन यू हैव सम डिसेंट ऑप्शंस. Living is very costly in Australia. The food part, the rent, the housing part is really costly. So you'll have to take care of that. Again, you have a lot of internship opportunities and work placements, mostly known for computers, finance, accounting related courses, nursing, जो allied medical services के courses हैं, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया काफी जाना जाता है. Main term is February, January वाला इनका main term है. Very few requirement. College grades अच्छे होने चाहिए, एक IELTS का एग्जाम का स्कोर चाहिए, and letter of recommendation from your college prof or your managers that is required, which is sufficient for Australia.
Australia would give you, parallelly working options 20 hours per week. But after you have completed your study, डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वहां पे वर्क वीजा, वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं. So not all courses will allow you to stay back in Australia and work. So when you're choosing Australia and when you're choosing courses that you want to do in Australia, be very sure कि क्या वो कोर्स के साथ आगे आपको कोर्स खत्म होने पे will they ask you to return to your home country या आपको वर्क परमिट मिल जाएगा. ऑस्ट्रेलिया में ये कोर्स पे डिपेंड करता है. चलिए, coming down to Canada, very very popular destination and very popular especially among Indians. Canada is like the most educated country. That's how they are referred to. A very safe country. वैसे सभी safe है और कोई भी safe नहीं है in that way, but one of the very safest as well. Very economical. Compared to US and UK, I will say your living cost and your university study cost is economical. US और UK से आप compare करेंगे तो. And if you are in areas, अगर आप कुछ एरिया ऐसे हैं जो थोड़े कोल्ड एरिया वहां पढ़ रहे होंगे तो आप देखोगे वहां तो और भी कॉस्ट कम है. They would in a way copy shadow US. जैसा US का एकेडमिक सिस्टम है पूरी तरह से ये उसी तरह से कनाडा भी चलता है. There is no difference. So that way they have inherited that from US and काफी अच्छे से करते हैं ये लोग. Computer, engineering, economics, finance, business related courses very very popular in Canada. कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा में, जैसे यू टोरंटो, मैकगिल, मैकमास्टर एंड सो ऑन. मेन टर्म इज इन सितंबर. दे वुड रिक्वायर, जैसा मैंने बोला, यूएस जैसे ही इनके भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे. वर्क परमिट या वर्क वीजा मिल जाता है बहुत इजीली. ड्यूरिंग योर स्टडीज ऑल्सो यू विल गेट वर्क अपॉर्चुनिटीज. एंड सबसे लिबरल है ये परमानेंट रेसिडेंसी में. इन केस यू वांट टू वर्क, स्टडी, वर्क एंड देन सेटल इन कनाडा, ये सबसे लिबरल है. उसमें आपको कुछ पॉइंट बेसिस हैं, वो पॉइंट्स आप पूरे करते हैं, आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है. एटलीस्ट दैट इज द केस अप टिल टुडे. अभी तक तो ये सबसे लिबरल कंट्री है. जर्मनी, वेरी यूनिक अमंग दिस सेट. जर्मनी इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन ये सबसे यूनिक है. अभी तक मैं जितनी भी कंट्रीज की बात कर रहा हूं उनमें. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई इट इज सो यूनिक. सो मोस्टली नोन फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज, रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में जर्मनी बहुत आगे है. ऑलमोस्ट आप देखेंगे ट्यूशन कॉस्ट, अगर वो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ट्यूशन कॉस्ट 0 है. वहां पे आपको सिर्फ लिविंग का पैसा देना है. अदरवाइज वहां पे सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी भी कॉस्ट कम रहती है. एंड देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी कंपेयर टू इवन कनाडा चीपर होंगे. तो ट्यूशन फ्री कंट्री बोला जाता है, बट वो ट्यूशन फ्री इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक यूनिवर्सिटी. स्टेट गवर्नमेंट की अगर यूनिवर्सिटी होगी तो ही वो ट्यूशन फ्री है, नहीं तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, विच विल नॉट बी मच. आपके इंडिया जितने कॉस्ट में आजकल आप ऐसा मान सकते हो, इंडिया में जो हायर एजुकेशन का कॉस्ट देना है प्राइवेट कॉलेजेस में, उतने में ही जर्मनी भी हो जाता है इन अ वे. टॉप क्वालिटी एजुकेशन, एक्सीलेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, जर्मन यूनिवर्सिटी का वेरी रेप्यूटेड, तो वो बहुत अच्छा है. इंजीनियरिंग फाइनेंस के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है. अक्टूबर सितंबर इनका भी मेन टर्म है. Requirements. Now this is something very unique for Germany. You will require very good college grades. आपके कॉलेज के CGPA बहुत अच्छे होने चाहिए. GRE is recommended. IELTS will be required. And depending upon university and course you are applying to, you may be asked for German language competency. तो ये बहुत important point है. आप कैसी यूनिवर्सिटी में और कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जर्मन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में बी रिक्वायर्ड. तो A1 सबसे बेसिक होता है, देन A2, देन B1. तो B1 मिनिमम है, मतलब थर्ड लेवल की कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए आपको, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए. देन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड अदर थिंग्स, प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन्ड ऑन माय स्लाइड, अगर आप देख पा रहे हैं, अ ब्लॉक्ड बैंक अकाउंट. जितना भी खर्चा होना है, मान लीजिए 2 साल का कोर्स है, whatever expenses be, you will have to block it in a bank account, और उस अकाउंट से at an equal interval वो पैसा रिलीज होता जाएगा to the given university. आपके ट्यूशन की बात कर रहा हूँ, लिविंग वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो आपका वो पैसा रिलीज होता जाएगा. In no other country there is a system like this, but it would be there in Germany. So if X
Rupees are required, ex-Indian rupees, they have to be blocked in a bank account. There are agencies in India, उनके designated agencies है, उससे वो पैसा release होगा. After your studies, of course, आप EU blue card बोलते हैं, वो जैसे US में ग्रीन कार्ड होता है या H1B, तो वैसे आपको EU ब्लू कार्ड लेना है, वहां पे सेटल होना है, तो उसके लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम्स हैं, आपको उस तरह से मिलेगा. बट आफ्टर स्टडी यू डू गेट वर्क परमिट और फिर आप ब्लू कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. So Germany is like that. It is very, very competitive in nature. German universities में, especially state universities में admission लेना बोलने में easy लगता है कि tuition free है, but because tuition free है वो, you see a lot of competition, not only among Indians, the Chinese and the Koreans and the other countries, students fighting for those limited seats. So this is about Germany. Let me show you the proof of pudding, like it is called. देखिए, so top 500 universities अगर हम world में लेंगे, तो you will see the share of United States, USA का sheer size of top universities in 500, 56 plus 36, so this is like 92, 60, and around 150 universities. So 30% universities to United States में है. Then you have United Kingdoms, and then Australia, Canada, बराबर, China and Netherlands and Switzerland, Germany, Hong Kong. So these are, ये just आपको बताने के लिए that UK or US or Germany, Canada, they have some of the great universities with them. Now, irrespective of आपको कहाँ पढ़ने जाना है, मास्टर्स कोर्स के लिए कुछ prerequisite होंगे. Most of the universities for masters will require you a bachelor's degree, proper full-time bachelor's degree चाहिए. They may ask you for 12 plus 4, 12वीं के बाद 4 साल का education चाहिए. 12th के बाद 4 साल. But let's say you have done BCA, BBA, आपने 3 साल के degree courses किए हैं, then उसका एक way around करना पड़ेगा अगर आपका 12 plus 4 नहीं हो रहा है तो. Some universities will accept 12 plus 3 depending upon आपकी Indian university का NAC status क्या है, NAAC, ये एक accreditation होता है, उसका status क्या है. अगर NAC accreditation high है तो आपका 12 plus 3 Indian university की डिग्री को accept कर लेंगे, नहीं तो 12 plus 4 ही चाहिए. आपको ये ध्यान रखना है. Academic requisites क्या है? Bachelor of Science you can apply for masters in any discipline. अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं, बैचलर ऑफ साइंस हैं, आप किसी भी डिसिप्लिन में, बीट इंजीनियरिंग आल्सो फॉर मास्टर्स यू कैन अप्लाई. बट इफ यू आर आर्ट्स और कॉमर्स ग्रेजुएट तो फिर ऐसा नहीं कर सकते, उल्टा नहीं जा सकते. आपके लिए लिमिटेशन है कि आपको आपके आर्ट्स और कॉमर्स या मैनेजमेंट फील्ड में ही रहना पड़ेगा. मेनी यूनिवर्सिटीज विल एक्सेप्ट टॉफल, बट आई कैन टेल यू आइल्स, अगर आपको सारे ही ऑप्शंस ओपन रखने हैं तो आइल्स इज अ वेरी सेफ ऑप्शन. ये एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट हो जाता है. अदरवाइज टॉफल, पीटीई, ये दूसरे टेस्ट स्कोर्स भी हैं जो एक्सेप्ट होते हैं. They may ask for GRE, may not ask for GRE. GRE ज्यादा पॉपुलर है यूएस, कनाडा एंड जर्मनी में, बाकी जगह GRE मैंडेटेड नहीं है. बजट, दिस विल डिपेंड एंड वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. मैं आपको यूएस और कनाडा के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा. रेस्ट पॉसिबली यू हैव टू टॉक टू अस सेपरेटली. सो लेट्स कम डाउन टू द कनाडा एंड द यूएस ऑप्शन. What are the similarities and differences? Like I said, admission process, they shadow each other. कोई difference नहीं है. They will follow each other in terms of requirements. Top ranked university you just saw US में ज्यादा है compared to Canada. Cost of education दोनों में बहुत wide range है, but Canada because of that Canadian dollar का difference 20% cheaper होता है US से. Visa process US में elaborate है. एक इंटरव्यू होगा, बायोमेट्रिक्स होंगे, मेडिकल होगा, बट कनाडा में कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है. बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कैनेडियन वीजा मिल जाता है. जॉब, बिकॉज यूएस इकोनॉमी इतनी बड़ी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब इन यूएस देन कनाडा. पेबैक ऑप्शन के लिए दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कोर्स कर रहे हो. तो यहाँ पे आई विल मेक अ पॉइंट क्लियर टू यू. अगर आप यूएस में कोर्स करते हैं स्टेम, ये मैं यहाँ लिख रहा हूं, अगर आप स्टेम बेस्ड कोर्स करते हो, देन लेट मी टेल यू, आपको वर्क वीजा, ये जो ओपीटी है वो 3 साल का मिलता है. 2 साल के मास्टर्स पे 3 साल का
OPT वर्क वीजा मिलेगा 2 साल के बाद, 3 साल। अगर स्टेम है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये मैनेजमेंट नहीं है, मैथमेटिक्स। तो अगर आपका कोर्स स्टेम क्लासिफाइड है, यू गेट अ हायर वर्क परमिट। कनाडा में भी बहुत अच्छा वर्क परमिट मिलता है। परमानेंट रेसिडेंसी, यूएस में लाइन लगी है, लॉन्ग वेटिंग पीरियड है। कनाडा वी नो इज रिलेटिवली मोर लिबरल, और यहाँ परमानेंट रेसिडेंसी जल्दी मिल जाती है। So these are some of the similarities or difference between the two. Let me come down to what are the ways in which we can go abroad and study and how we can do it. So generally 2 रूट हैं। एक रूट वो रूट है where we call it non-merit route, जहाँ पे more financial muscle चाहिए and less academic strength चाहिए। The second is merit route, जिसके बारे में आज मैं ज्यादा बात करूंगा। I'll not talk about non-merit route. Non-merit route आप लो रैंक यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन ले सकते हैं, कॉस्ट कुड बी लो टू हाई, नॉट वेरी गुड एकेडमिक्स, और एकेडमिक्स का जोर नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं है। मॉडस ऑपरेंडी, इनके कमीशन एजेंट्स हैं, प्लेसमेंट एजेंट्स हैं, बहुत मैच्योर सी इंडस्ट्री है ये। यू विल सी देम, उनके एड्स आपको दिखेंगे फेसबुक पे या होर्डिंग्स पे। इनके फेयर्स होते रहते हैं होटल्स में। हमारे मुंबई में एयरपोर्ट के पास वो एक होटल है, आई थिंक JW मैरियट, और उसमें एक फ्लोर और एक रूम रिजर्व्ड है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी फेयर्स होते ही रहते हैं। सो यू गो देयर, शो दैट यू आर पास, यू हैव फुलफिल्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, और आप एडमिशंस ले सकते हो। यू पे एंड गेट एडमिशन। इसका एंड रिजल्ट इज नॉट दैट गुड, यू डू गेट अ स्टडी अब्रॉड स्टैम्प। अब आपको वापस ही इंडिया आना है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, और ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वो बैरियर्स उतने हाई नहीं रखना है, गुड ऑप्शन। बट अदरवाइज प्लेसमेंट्स में और रेसिडेंसीज में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो दीज आर नॉन मेरिट रूट। ऑफ कोर्स मैं इसकी बात कर रहा हूं, बट इसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। The merit route is where we are talking about highly ranked, reputed university, low to high cost with scholarships. They will require good academics. They will ask you to file an application by appearing for some exam, making application kit, LOR, SOP सब बनाओ, apply और merit basis पे admission. End result, good placements, highly reputed, आगे जाके residency में मदद मिलती है। सो सुंदर पिचाई, गूगल सीईओ, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, इन लोगों ने यही रूट लिया, जहां पे वो मास्टर्स करने गए, टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर किया, एंड वी नो वेयर सुंदर पिचाई इज एंड व्हाट ही इज डूइंग। सो वी आर रेकमेंडिंग मेरिट रूट एंड नॉट द नॉन मेरिट। सो कमिंग डाउन टू द मेरिट रूट, द रिक्वायरमेंट वुड बी फॉलोइंग। फॉर यूएस एंड कनाडा की बात कर रहा हूं मैं। You will have to write one exam called GRE, Graduate Record Examination. You will need English exam. आपको कुछ English exams लिखने पड़ेंगे. You can write either IELTS or TOEFL. US और Canada में TOEFL और IELTS दोनों equally accepted है. आप कोई सा भी लिख सकते हो, कोई difference नहीं है. Both exams are of similar nature. They are not same, but they are of similar nature. TOEFL stands for Test of English as Foreign Language. IELTS stands for International English Language Testing. तो दोनों में से कुछ भी करो, एंड योर प्रोफाइल। तो एट अ ब्रॉडर लेवल 3 चीजें चाहिए, एक GRE का स्कोर चाहिए, एक इंग्लिश एग्जाम चाहिए, और एक आपकी प्रोफाइल चाहिए। प्रोफाइल में बहुत सारे लेयर्स हैं, मैं भी समझाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले GRE समझते हैं। व्हाट इज GRE? नाउ दिस इज वन एप्टीट्यूड टेस्ट, आप इसको बोल सकते हो, कंडक्टेड बाय बॉडी कॉल्ड ETS। ये एक यूएस बॉडी है जो GRE कंडक्ट करती है। It is required for admission to graduate courses for all major universities across world. Very, very popular exam. Recognized world over. GRE exam क्या है? It has 3 parts. It has verbal, English वाला part है जिसके 2 sections होते हैं. Then quants है, maths है जिसके 2 sections होते हैं. और एक analytical writing है, essay writing जैसा एक section. All in all, this test is a 3 hours 45 minutes test which is computer based. मल्टीपल चॉइसेस हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड योर स्कोर रेंजेस बिटवीन 260 टू 340। ये सब आपको PDF में मिल जाएगा। 260 से 340 के बीच में आपका स्कोर आता है, 0 जैसा कोई स्कोर नहीं होता है GRE में। ऐसे एनालिटिकल राइटिंग का स्कोर अलग से आता है। दिस इज अ स्मॉल अपडेट फॉर यू गाइस। GRE इज अंडरगोइंग अ चेंज। September 23, आने वाले September 23 से it is proposed that it will go under a small change. It will become short in duration.
थोड़ा सा 3 घंटे 45 मिनट से थोड़े सा टाइम कम हो जाएगा, बट द स्किल्स दैट दे आर टेस्टिंग वो चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ अगर आप सितंबर के बाद लेते हो तो उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा जीआरई टेस्ट का, दैट्स व्हाट इट इज। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग डाउन एंड ड्यूरेशन इज गोइंग डाउन। In this test, this is conducted almost in the entire academic calendar. रोज ही होता रहता है जीआरई, मंडे टू फ्राइडे आपको आपका अपॉइंटमेंट लेना है और जाके एग्जाम देना है। A student can take maximum 5 shots at GRE. आप 5 बार से ज्यादा GRE in a given year नहीं ले सकते हैं, and between any 2 attempts there should be minimum 21 days का गैप। तो कहने का ये मतलब है बच्चे इसको एक से ज्यादा बार लेते हैं to get good scores. Total fees is $205. Every time you take GRE आपको $205 की एक फीस देनी है। This exam can be taken multiple times. All scores are valid for 5 years. आप कितने बार भी ले सकते हो, जो भी आपने स्कोर ऑब्टेन किया उसकी वैलिडिटी 5 years है फ्रॉम टेस्टिंग। तो योर बेस्ट स्कोर्स ऑफ द स्कोर दैट यू हैव गॉट ऑन जीआरई वही रिपोर्ट होता है, कोई एवरेज जैसा कुछ नहीं है। Whatever is your best score, you can apply with that score. तो बच्चे on an average 2 बार तो GRE लेते ही हैं, just to see if they can improve it. The first time they are given उससे improve कर सकते हैं क्या? चलिए, so like I said, maths और English का टेस्ट है। 12th level तक का maths आएगा। अगर आपने maths 12th तक पढ़ा है तो 12th तक का maths आएगा, not very technical, can be prepared in 3 to 4 months. It requires conceptual understanding and you can take it multiple times. Okay, scores are valid for 5 years. इसके अलावा और क्या चाहिए जीआरई के साथ? जीआरई के साथ आपको इंग्लिश और टॉफल टेस्ट चाहिए, which are test for English language. Both are computer based. Both again happen almost daily. TOEFL ETS करता है, IELTS का एग्जाम ब्रिटिश काउंसिल या IDP करते हैं। Scores are valid for 2 years. IELTS और TOEFL के scores 2 साल के लिए valid है guys. Remember that. GRE 5 साल के लिए वैलिड था। Both tests have 4 sections: reading, writing, speaking, listening, सब इंग्लिश के सेक्शंस हैं। IELTS का जो स्कोर होता है वो 9 बैंड में से आता है। IELTS इज आउट ऑफ अ सिंगल डिजिट 9, आपका स्कोर 9 में से आएगा। TOEFL का स्कोर जो है वो 120 पॉइंट्स में से मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन विच एग्जाम यू आर राइटिंग, दिस इज हाउ यू आर स्कोर्ड। दोनों एग्जाम में 4 सेक्शन है, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड है, एंड दे हैपन ऑलमोस्ट डेली। अपॉइंटमेंट लो, आपको 7 से 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, एंड गो एंड राइट दिस टेस्ट। ओके, वी डू मल्टीपल बैचेस, TOEFL वी डू 2 बैचेस, बट IELTS बहुत पॉपुलर है क्योंकि मैंने आपको बताया अक्रॉस कंट्रीज IELTS की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। सो वी डू अ बैच एवरी मंडे फॉर IELTS। तो अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो 2 चीजों की हमने बात कर ली, एक टेस्ट स्कोर चाहिए और एक IELTS TOEFL चाहिए। What are the other requirements for US and Canada? Academic records, आपके कॉलेज ग्रेड्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर 4 ईयर डिग्री कोर्स है तो 4th ईयर का 7th सेमेस्टर, मिड टर्म जिसको हम बोलेंगे, ये सारे ग्रेड शीट्स चाहिए। These are very important, as important as any other रिक्वायरमेंट ऑन योर एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, को मेंटेन करके चलो, ये चाहिए। इफ देयर इज एनी कॉलेज अकम्प्लिशमेंट्स, आप सोसाइटीज को लीड कर रहे हैं, आपने कोई सब्जेक्ट में आप थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर कुछ और है एकेडमिक अकम्प्लिशमेंट्स तो बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स, अगेन द इवेंट्स, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, वो सब, कम्युनिटी सर्विस अगर आपने कुछ किया है तो इट विल हेल्प। एंड स्कॉलिस्टिक कॉम्पिटिशंस, कोई गूगल कोडिंग कंपटीशन जैसे होते हैं, आपने कुछ ऐसी चीजों को अक्वायर किया है, आपकी कोई पोजीशन लगी है, इट हेल्प्स। अगर ये सब चीजें हैं तो ये सब प्रोफाइल का पार्ट है। GRE, इंग्लिश एग्जाम और प्रोफाइल, तो ये सब चाहिए प्रोफाइल में। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर कॉलेज प्रोफेसर, जनरली 2, बट कई बार 3 कॉलेज प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशंस चाहिए। वो प्रोफेसर जिनके सुपरविजन में आपने कोई रिसर्च किया है, इंटर्नशिप की है, कोई प्रोजेक्ट किया है, वो प्रोफेसर जो आपको पढ़ाते हैं, दे मस्ट बी योर प्रोफेसर्स हु वुड हैव टॉट यू इनसाइड क्लासरूम्स ऑफ कोर्स। कॉलेज प्रिंसिपल या HOD नहीं, उनको पढ़ाना चाहिए आपको, वो कभी ना कभी उन्होंने आपको पढ़ाया हो, उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, LOR, basically is talking about your positive, small weakness,
strength, and how would that professor rate you. ऐसा वो पूरा एक पेज का एक recommendation बनाते हैं आपके लिए. Generally professors बच्चों को छोड़ देते हैं, तो we guys professionally हम उसको develop करते हैं. Professors read it, endorse it, और फिर वो university को देते हैं. And the fifth requirement I should say is application. Personal essays, 600 words में, 800 words में, talking about your career goals, your interest, why you want to do what you want to do. तो एक long essay लिखना पड़ता है, professional essay. So all universities in US or Canada will ask you for these essays, LOR, GRE, TOEFL, and your academic record. So ये सारी चीजें important है. Scholastic competitions, extra currics, ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई problem नहीं है, but बाकी सब चीजें compulsory. तो ये हो गई requirement. So we generally recommend students, क्योंकि GRE एक अच्छा लेवल का एग्जाम है, टेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल. आपके प्री फाइनल ईयर में ही लेने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार आपको इसको 2 बार लेना पड़ता है. So अब मैं आपको 3 टाइमलाइन सजेस्ट करता हूँ. First is for people who have completed their graduation or are completing in, let's say, this month या आने वाले महीने में वो complete कर लेंगे और वो graduate हो जाएंगे. So you guys, for you, I have only one solution right now where we can help you save your 6 months. वो कैसे? So rather than going next August या next July, इस साल का तो आपने बस मिस कर दिया है. तो आपको मार्केट में कुछ लोग बोलेंगे कि अभी रोलिंग एडमिशंस ऑन है और हम आपको करवा देंगे. I will ask you to avoid if possible, अगर बहुत बड़ा कंपल्शन नहीं है तो अभी मत जाओ, आपने मिस कर दिया है बस को. आप जल्दी से जल्दी स्प्रिंग मतलब जनवरी फरवरी वाले में जा सकते हो. मेक श्योर आप कुछ GRE स्कोर अगर आप जुलाई तक ला सकते हैं तो यू गेट दिस स्कोर, वरना GRE एग्जामिशन वाली यूनिवर्सिटीज ढूंढनी पड़ेंगी आपके लिए. जून से अगस्त, अभी से लेके अगस्त तक आपका एप्लीकेशन का काम चालू हो जाएगा. LOR, SOP, ग्रेड शीट, ट्रांसक्रिप्ट, रिज्यूमे बनाना, वो सब का चालू रहेगा. अगस्त में जब हम एप्लीकेशन लगा देंगे तो अक्टूबर से लेके दिसंबर आपको एडमिट्स आ जाएंगे यूनिवर्सिटीज से, एंड यू कैन डिसाइड इन दिसंबर एंड फ्लाई आउट इन जनवरी, दिसंबर जनवरी फॉर योर. अब ये जो डिसीजन है, तो आपका वीजा भी नवंबर दिसंबर में आपका वीजा लगेगा जैसे ही एडमिट आएगा उसके बाद. तो वीजा एंड डिपार्चर विल हैपन बिटवीन दिसंबर टू जनवरी for spring intake. This will help you save your 6 months अगर अभी तक कुछ और नहीं किया है तो, rather than waiting for 1 year and going next year. Let's say you are in your final year right now. कोई अपने 3rd year final year में होगा 3 साल के कोर्स में, कोई अपने 4 साल के कोर्स में 4th year में final year में होगा. So in that case आपके लिए fall 24 admit open है. fall 24 admit अगर आप ले रहे हैं, so I will suggest जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में आपके GRE स्कोर्स अवेलेबल हो जाने चाहिए. IELTS का स्कोर अवेलेबल होना चाहिए. स्टार्टिंग दिस अक्टूबर से लेके फरवरी तक, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर अप्लाइंग एंड विच यूनिवर्सिटीज यू आर अप्लाइंग टू, उनके डेडलाइंस होंगे, एप्लीकेशन लगना चालू हो जाएगा अक्टूबर से फरवरी के बीच में. तो उसके पहले ऐसे LOR वो सब रेडी करना है. आपको एडमिट डिसीजन दिसंबर से लेके मार्च 24 के बीच में आएगा. आप मई 24 तक डिसाइड कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट पार्ट. आपको मार्च में एडमिट आ गया, दे गिव यू ऑलमोस्ट लाइक 2 months टू डिसाइड वुड यू वांट टू जॉइन देम. तो मान लो 6 को अप्लाई किया, 3 में से एडमिट आया, यू कैन डिसाइड इन 3 में से किसको ज्वाइन करना है, गिवन 2 full months. मई में यू डिसाइड, यू राइट योर कॉलेज का फाइनल एग्जाम्स, आप लिखो, खत्म करो उसको. गो फॉर योर वीजा. जून जुलाई में आपके वीजा का काम होगा. अगस्त में डिपार्चर फॉर US और कैनेडियन यूनिवर्सिटी. तो अगर आप 4th ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं अपनी स्टडीज के, दिस इज व्हाट योर सैंपल टाइमलाइन कुड लुक लाइक. तो ये मैं 1 मिनट के लिए स्लाइड पे रहता हूं, आप इसको देखें समझें. अब अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है और आप 1 साल रुकना चाहते हैं, आपका वर्क, आपको कोई जॉब मिल गया एंड यू वांट टू स्पेंड 1 year वर्किंग एंड देन अप्लाई, तो भी आपके लिए टाइमलाइन कुछ ऐसी ही होगी. इट वुड बी द सिमिलर टाइमलाइन फॉर यू गाइस. If you are in your pre-final year, let's say 3rd year, pre-final year, fall 25 में जाना है, so you have a lot of time with you. Prepare for GRE well. Try and write your GRE between this December to coming June. अच्छा time है, दोनों attempt इसके बीच में ले लो. Get a good score of GRE and IELTS between this period. We'll apply and start your application from next year September से December के बीच में. Similar, December to March 25 के बीच में admits.
You decide by May 25. You write your final exams in May 25. June, July goes into visa. August 25 is your departure. This is the timeline for pre-final year students. अगर आप फर्स्ट ईयर में ही हो अभी या सेकेंड ईयर में ही हो तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम. आप बस ईयर चेंज कर दो. That's how your timeline will look like. So this is the kind of timelines you have. So we would recommend try and take GRE as early as possible. Possibly ideal time is in your pre-final year. क्योंकि आप application में ऐसे लिखना, LOR लिखना, वो सब थोड़ा सा involving work होता है. Focus on your college and grades. You get more time with your college things and you can apply. चलिए. I said academic records important हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये GPA क्या होता है. So Indian universities you will see they work on a 10 का scale. Foreign universities वो convert कर लेते हैं, आपके 10 वाले स्केल को वो 4 के स्केल पे कन्वर्ट कर लेंगे. तो एक टेंटेटिव आइडिया, अगर आपका GRE स्कोर 330 प्लस है और आपका GPA 3.95 ऑन अ स्केल ऑफ 4, मैं 4 के स्केल पे बात कर रहा हूँ, then you have a high chance of getting into top 25 universities of the world. US कनाडा में जो टॉप 25 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, आप उनमें जा सकते हैं. एंड सिमिलरली इसके किसी न किसी क्रिस क्रॉस एंड मिक्स एंड मैथ से यू कैन लुक इनटू व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज यू कैन गेट. बट दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव आइडिया बिकॉज आपके प्रोफाइल में प्रोजेक्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस जो भी होगा that will also contribute and things can change. But generally पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितना GPA चाहिए. तो आप देखोगे GPA of around 3.8 on a scale of 4 या 3.5 on a scale of 4 is a very interesting important GPA to get into top 100 universities of the world. चलिए, I come down to the cost part. अब ये सब खर्चा कितना आएगा बाहर पढ़ने जाने का? How much will it cost me? So all the costs that I am talking about, we have broken it into 3 buckets. इनको 3 bucket में बांट दिया है. This has nothing to do with quality. हर bucket में equal quality के universities आपको मिलेंगी. Top notch, A+, B grade, all type of quality universities will be there. अभी सिर्फ purely cost के basis पे हमने universities को बांटा economical, mid range and premium cost के basis पे. इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज हैं, और ये यूएस और कनाडा में मिला के बात कर रहा हूं मैं आपसे, वेयर योर स्टडी कॉस्ट कुड बी 10 to 20 लाख रुपीस पर एनम और 2 साल का खर्चा 40 लाख रुपए आएगा. इसमें क्या आया? इसमें आ गया ट्यूशन प्लस लिविंग. आपका इंश्योरेंस, ट्रैवल, बुक्स, लैपटॉप्स वो सब अलग है, बट हाउसिंग एंड योर ट्यूशन इज इंक्लूडेड इनटू दिस. मिड रेंज यूनिवर्सिटीज का कॉस्ट रेंज होगा 20 to 30 लाख रुपीस, 40 to 60 lakhs for 2 years. हम 2 साल का मास्टर्स मान के चल रहे हैं. प्रीमियम वुड बी अप टू 50 lakhs और सो, एंड योर कॉस्ट कुड बी 60 to 1 CR, 60 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा प्रीमियम यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू स्टडी. ईच कॉस्ट बकेट हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, हर क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज हैं. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं तो मोटा मोटा इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आप ये मान के चलिए आपका खर्चा अराउंड आप देखेंगे 25 to 35 lakhs rupees per annum, which is something like 50 to 70 lakh rupees for the entire duration आएगा, assuming कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, कोई इंटर्नशिप नहीं मिली. अगर वो मिलती है तो ये खर्चा कम हो जाएगा. दिस इज द कॉस्ट थिंग. अब स्कॉलरशिप पे आते हैं, तो स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, क्या मिलता है? So there are various opportunities for PG post graduation के लिए at the for scholarship. You get scholarship offers at the time of application. जब आप अप्लाई करेंगे तो आप एप्लीकेशन के साथ आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, and you can show interest and you will get with your admission letter आपको scholarship decision भी पता चल जाएगा. Mostly they are merit based. Few are on need based. आपके इनकम, पेरेंट्स इनकम, फैमिली इनकम के बेसिस पे भी कुछ होते हैं जिनको नीड बेस्ड बोलते हैं, बट जनरली ये मेरिट बेस्ड होते हैं जिसको नीड ब्लाइंड बोलते हैं. 40% स्टूडेंट्स गेट इट विथ देयर एडमिशन डिसीजंस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बट अ लार्ज मेजॉरिटी गेट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंस असिस्टेंस आफ्टर दे जॉइन द कैंपस.
and that could come in this form. TARALA, ये क्या होता है? टीचिंग असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप, लैब असिस्टेंटशिप्स. तो आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाता है. 8 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए साल का आप आपका खर्चा निकाल सकते हो. इतना आपको स्टाइपेंड प्रोफेसर्स के साथ लैब में, रिसर्च में, ऑन कैंपस जॉब में मिलने लग जाता है. मेरिट बेस्ड अगर आप वहां अच्छा जीपीए मेंटेन करते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीन्स लिस्ट. डीन्स लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को ट्यूशंस वेवर मिलने चालू हो जाते हैं. 90% ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेड इनमें से कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं. तो आपका लैंडिंग कॉस्ट हो सकता है 60 lakhs नहीं होके 35-40 lakhs हो 2 साल का. बट वन शुड बी मेंटली रेडी कि मेरा ये खर्चा आएगा. एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट में डिफर में भी लेसर. एजुकेशन लोन्स बहुत इजीली मिल जाते हैं. इफ यू गेट योर एडमिट लेटर फ्रॉम टॉप गुड यूनिवर्सिटीज, दे आर इजीली अवेलेबल इन द नेम ऑफ स्टूडेंट. Parents will act as guarantor. So against some property or something, you may have to do that because you are guarantor. बच्चा ही चुकाएगा. Repayment terms बहुत flexible होते हैं. You can pay interest now. You can pay only principal now. You may not pay anything now. After graduation और उसके भी 6 months के बाद you may start paying. तो इस तरह से payment terms मिल जाता है. And tenure could be 15 to 20 years. 7 to 8. ये थोड़ा सा बढ़ गया. I'll say it is 8 to 9% now. And state run banks education loans easily देते हैं. आपको NBFC से लेना है, नॉन बैंकिंग से लेना है, तो वो इंटरेस्ट रेट वहां पे हाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, एजुकेशन लोन्स मिल जाती हैं. सो टिपिकल करियर पाथ कैसा है? अब मैं आपसे वर्क वीजा की बात कर रहा हूँ. सो इफ यू आर डूइंग मास्टर्स, 2 साल का आप मास्टर्स करोगे कनाडा या यूएस में, ये आपको 2 साल हो गए. इफ यू आर डूइंग, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपका मास्टर्स स्टेम वाला है, अगर आपका मास्टर्स साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड मास्टर्स है, तो आपको आपका पहला ओपीटी मिलेगा 2+1 3 years का. अगर नॉन स्टेम है तो ओनली 1 year का स्टडी के बाद वीजा मिलेगा, वर्क वीजा. ये आपको ध्यान रखना है. सो लेट मी गो अहेड. तो 3 साल का मैं स्टेम अज्यूम करके चल रहा हूँ. 3 साल का आपको ओपीटी मिला. 3+2 5 years आपको यूएस में हो गए. Students at times they may enroll into let's say PhD. 3 से 6 साल की PhD होगी. उसके बेसिस पे कुछ OPT वापस मिल जाएगी 3 साल की. आप 11 साल वहां रह लिए. अगर आप 11 साल यूएस में रह लेते हैं तो यू बिकम एलिजिबल फॉर ग्रीन कार्ड. बट लेट मी टेल यू एट द सेम टाइम, मास्टर्स और OPT करने के साथ साथ आप वहां पे एप्लीकेशन लगा सकते हो. और अगर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, दैट इज इनफ फॉर यू टू स्टे देयर एंड कंटिन्यू. Of course, Canada में ये थोड़ा सा easy है, but this is how it works out in US. चलिए, so I come down to how do we help you? हमारे पास क्या programs हैं? So we can help you with your training part. GRE IELTS courses we do online only, and we can help you with application support. ये 2 module है. So training GRE IELTS, ये दोनों या कोई भी training आपको हमारे साथ करना है. या application support, profile mapping, university selection, essay writing, LOR writing, resume, transcript, everything, submission of application and getting I-20. ध्यान रखिए, I-20 is a document जो आपको वीजा के लिए लगता है यूनिवर्सिटी से एडमिशन के बाद. तो हम वो पूरा सपोर्ट आपको I-20 तक देंगे. That is my application support. Visa, in case you need that, वो extra है. So IELTS batches we do every Monday, like I said. GRE again, every Monday we launch multiple batches. So in case you want to do that, you can get in touch with us. Application support में मैंने आपको बताया, profile mapping, university selection, LOR, SOP, all document preparation and filing of application is what we do. All our classes, IELTS या GRE are online classes only, over Zoom, live online classes होंगी, because students are in their hostels या जैसे भी हैं, तो उस हिसाब से ये classes होंगी and you can do them. These are some of our results. So ये PPT में आपको दिख जाएगा, where students you will see have gone to US, Canadian, UK, German, Swiss universities. These are some of the recent admits. I'll just quickly come down to your question and answer part. So for us, these programs are flexibly done, and it has been 24 years for us now, and you can pursue these courses. I'm sure I've been able to answer many questions, if not all, about studying abroad. As we now move to the last part, if you have any specific questions,
feel free. Ideally, you should unmute and ask your question and I'll answer them. If you want a one-on-one counseling, क्योंकि आपका case अलग हो सकता है, which is mostly the cases where you have your own, subjective things into your application, you can call up Mrs. Jyoti at this number or write to her, and she will fix an appointment with me or my counselor. You can meet online, and then you can decide how you want to do your study abroad. अगर आपको PDF चाहिए, ये जो मैंने present किया है, तो उसका ये WhatsApp नंबर है 77100 ये नंबर आपको सेव करना है और फिर इस पे हाई भेजना है WhatsApp पे. You will get PDF right after this webinar. आपको इसका PDF मिल जाएगा as your personal copy. ज्योति का नंबर नीचे mentioned है. Mrs. Jyoti can help you get an appointment with me, and this is a WhatsApp number जहाँ पे आप हाई भेज के अपनी एक personal PDF copy obtain कर सकते हैं. With this, first let me tell you thank you for sparing time on this Sunday morning and spending that time with us to understand masters from US and Canada, the GRE. With this, thank you so much. Number once again on your screen for attending this. I am open for questions now. So, as a feedback link hai aapke chat box mein. Do give us feedback so that we can improve this webinar experience. So let me stop share, come down to the home screen, and I see Hanmant Raj Purohit. Please ask your question. Please unmute and ask your question. Unmute करिए, आपने hand raise किया है, and ask your question, please. Mr. Hanmant? Okay, maybe he doesn't have a question. So any questions, please unmute and ask. Okay, so Mr. Rajkumar is asking me what is the fees you are charging to student. So first of all, thank you for the first question, Mr. Rajkumar. The fees depends upon what program you choose. आप GRE कर रहे हैं, IELTS कर रहे हैं, university application कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं. Plus, what is your current GPA? Because we offer scholarships if your GPAs are high. So what I will request is you can talk to Mrs. Jyoti and she can send you a proposal around what is that you are looking for, and you will know about our service charges. मेरे कुछ training के charges हैं, GRE IELTS, मेरे कुछ university application के charges हैं, तो depending upon आप क्या क्या pick करते हैं या क्या pick करते हैं, उस हिसाब से आपकी fees decide. Thank you. Any other questions you have for me? मैडम देशपांडे, आपने वीडियो ऑन कर रखा था पूरे वेबिनार में. थैंक यू फॉर दैट मिसेस शर्मिला, बिकॉज आपको देख के एंड आई थिंक मोरे साहब को देख के, अगर मैं सही पहचान पा रहा हूँ, तो मैंने पूरा वेबिनार लिया है. थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैडम आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट्स द फी फॉर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट विद CGPA 7, एंड दिस 7 is out of 10, madam, if I understand correctly. Okay. So, which fees are you talking about? You are talking about our fees? So, madam, मैं आपको एक rough idea दे देता हूँ. So, if you understand, the training fees could be anywhere around 25,000 GRE IELTS के कुछ उसके आसपास होगी. And university application fee अगर आप करेंगे हमारे साथ, तो उसका भी range 25 से 30 के बीच में होगा. University application में ये सब include होगा. Microbiology में, which is the best country? This is the question that is being asked to me. Sir, if you understand now, you are talking about microbiology. So US, Germany, these are two great options. Not saying that UK or Canada में नहीं होता है, but given the scientific research and the concentration of companies in these two countries, US could be preferred first, followed by Germany. Kashish Mamania, please unmute and ask your question. Yes, sir. I'm currently in my second year of engineering. So I want to go abroad, like for masters after like gaining work experience. So like After when should I work experience, did you say? Yes, yes. Okay. So when should I start preparing for the GRE? देखो, अगर वर्क एक्सपीरियंस लेना एंड यू आर वेरी श्योर कि आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना ही है, तो फिर इट डिपेंड्स कि आप कितने साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस लेना है. तो मैं विदाउट वर्क एक्स आपको बता सकता हूँ. सो इफ यू आर नॉट लुकिंग एट वर्क एक्सपीरियंस एंड आपको राइट आफ्टर इंजीनियरिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू वांट टू गो फॉर योर मास्टर्स,
थर्ड ईयर विच इज बेसिकली फोर्थ सेमेस्टर के बाद, और फोर्थ सेमेस्टर के बाद जो भी इंटर्नशिप होगा वो खत्म करो, एंड राइट आफ्टर दैट स्टार्ट विथ योर GRE प्रिपरेशन कशिश, विच इज फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में GRE प्रिपरेशन करके खत्म करके पहला स्कोर आ जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ सिक्स सेमेस्टर. Okay. And like minimum, let's say 2 years का work experience हुआ, तो then तो वो तो after that, डिपेंड करेगा कि आपको आपके वर्क एक्स पे कितना टाइम मिलता है उसकी तैयारी करने का और आप कैसा कर पाते हो. सो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव. okay. Thank Thank you. you. Mr. Hanmant Rajpurohit. Yeah, thank you. Actually, I was unable to unmute that time. No problem. Okay, see, I have a question. I was just exploring to apply for a visitor visa or a family to US, just for a visit. I mean, I was just exploring, and then I saw that once you are able to get visitor visa, it is valid for 10 years. Okay, so if I do that, maybe for me, for my wife, and for my children, okay, and then I'm not sure when I will travel, but just to apply for a US visa. So will that have, my child is in second year of engineering. Supposing if I apply for a visa for my family, then it would be valid for 10 years. So will it be okay for my child who is in second year of engineering when he will go to third year? Again, he'll have to apply, or how will you throw some light on this? So short answer is, I've understood your question. Answer is the visa that you get, and it's a very good question, that you go for while you're going for abroad is F1 category. आप अभी जो टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे वो कोई बी से कुछ होगा वो वीजा, आपको F1 चाहिए. So he'll have to reapply and get his visa status changed. So it doesn't make sense to apply visa for him then. If that is your objective, yes. Anyway, you'll have to reapply. आपको F1 चाहिए, sir. Okay, thank you. There's a question: what are the favored extracurriculars that universities require? So there's nothing called as favored. I will just give you one pointer, Anshul. The extracurriculars that you do or you have should highlight some of your personality traits and should be in some way related to the major that you want to do. मैंने बहुत छोटा सा आंसर दिया है आपके इस क्वेश्चन का कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स होना चाहिए जो फेवर होता है. एक तो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स में से कुछ चीजों को हाईलाइट करे, दूसरा या फिर it should match with the kind of major that you want to do in your masters. चलिए, Mr. Vansh Pahuja, please go ahead, sir. Yes, sir. Is there any benefit in doing job experience, like for the admission procedure? Yes, of course. So if you have a work ex and if you get good letter of recommendation from your reporting manager, it helps, Vansh. It helps. Okay, thank you so much. Chali, any other question? Mr. Gupta, you have a question for me? Hello. Yes. Hello. Yes, ma'am. Sir, I want to ask that is it advisable to go directly after completing engineering exam, or one should have experience, work experience there? हाँ, तो ये ना मैडम आपने जो मुझसे पूछा ये बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है. I'll answer it indirectly. So what I can tell you is there is no work experience required for any technical course that you want to do. If you are going for a management course, then 2 years of work ex is mandatory. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप MS करने जाना चाहते हैं. अभी we have a student from IIT Bombay who's going to Georgia Tech, which is one of the very high rated university. वो अपना MS करने जा रहा है, पूरी तरह से फ्रेशर है. तो क्या उसको कोई डिसएडवांटेज था और उसको टॉप एडमिट नहीं मिला? ऐसा नहीं है. तो अगर आप टेक्निकल कोर्सेज करने जा रहे हैं जो स्टेम बेस्ड है, वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट कंपलसरी. अब आप डिसाइड करें कि आपके पास क्या जॉब ऑफर हाथ में है, कहाँ से है, क्या जॉब प्रोफाइल है, आपको करना है क्या वो, या आपको सीधा पढ़ने जाना है. Okay, sir. Thank you, sir. Mr. Sakil People Khan. in India, Yes. people in Indians are saying that parents are saying that it is advisable do 2 years work experience work here, then it is more easy to adjust there. नहीं मैडम, ये सब ना आई से
ये पर्सनल एक्सपीरियंस किसी का वैसे होगा, ये ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि आप वहां एडजस्ट ज्यादा कर लोगे क्योंकि आपने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस किया है. देयर इज नो सेट फॉर्मूला फॉर दैट. So Okay, sir. you take your call. Thank There is no right answer to this, I should say. Yes, Mr. Shakil Khan. Sir, you'll have to unmute. Yes, I want to pursue masters in law, but I've got a gap of 12 years now. Okay. And this gap here is basically you have practiced in India, sir? I'm practicing still in Bombay High Court. Very nice, sir. In this case, possibly this is not the right platform, but yes, we can do this. We'll have to talk to you separately. And law has a very different, law and medicine, ये दो ऐसे careers हैं या courses के, they have a very different route to follow if you want to do it from US. So we'll have to meet you separately, sir. आप हमसे time लीजिए and I'll connect you to my law expert. Law and medicine बिल्कुल अलग चलेगा, बाकी सब एक जैसा चलेंगे. Okay. Right. Yes, Kashish. So I had another doubt was that if like as a tourist you visit US, so is the personal interview like not taken? I've heard somewhere, but I'm not sure if it's true. Like for the student visa, you have to give a personal interview. So if you have a tourist visa or you have visited US as a tourist, so they let it go. Is that true? Like they don't take the personal interview. For what? For the student visa. If you have tourist visa. If you have visited US as a tourist. Then they don't take your interview. Is it true? I've heard. First, let me tell you, interviews are not job interviews. बहुत basic से question होते हैं जहाँ वो जानना चाहते हैं कि क्यों पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने के बाद क्या करोगे. So interview से डरना नहीं है. और ये जो भी आपने सुना है, अगर कोई बहुत specific case है तो बात अलग है. You may be talking about an exception, but otherwise there are no exceptions to the rule. Okay. So don't worry about the interview. Okay. There's a question, Swayam Raut. Hello, sir. Is it allowed to pursue masters in a field which is different from my field of bachelor's? Very, very good question, Swayam. I don't know if you are still there. ये बहुत अच्छा question है. So if you want to, let's say, change your bachelor's वाला degree, मान लो आप mechanical engineer हो और अब आपको artificial intelligence में या cyber security में masters करना है, क्या ये allowed है? So the theoretical answer is yes. You can still do it, Swayam. But the challenge will be, we'll have to create a defense, we'll have to write possibly an essay to create a defense. आप ये switch क्यों करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो? But yes, ये possible है और बच्चे ये करते हैं. चलिए, Mr. Yusuf, you have a question for me? So, Mr. Shakil Khan, आपने मुझे text में भी किया है. Yes. You have asked me, can you pursue this? A gap of 12? Yes, 100% you can do this course. As far as eligibility is concerned, आपकी eligibility पे कोई question mark नहीं है. इतना work ex लेके आप कर सकते हैं. When will we get recording of this video? Nilesh sir, can you help me understand this? ये question है. When will we get recording of this video? Yeah, this session is getting recorded on Facebook page, so you can visit our Facebook page, and I'm sharing the link in the chat box. So this recording will be available after we finish. Question is, how important is work experience to admission prospect? I should tell you, Anshul, that if you have work experience, extra brownie points उसके मिलेंगे compared to a fresher. एक fresher को कोई negative marks नहीं मिलेगा, मगर आपको उसके positive marks मिलेंगे. I am pursuing BFM second year. Can I get more information on studying abroad to UK? Dominic Raj. Dominic, I will again request you. आप UK की बात कर रहे हो. हमने आज masters US Canada किया है. Take appointment. वो number है Mrs. Jyoti का. I will just share and meet us separately because आपका ये BFM 3 साल का degree course होगा शायद. So we'll have to talk to you separately. Mr. Yusuf, please ask your question. Hi, good afternoon. Hi. The thing is, my name is Amina. So when you said Mr. Yusuf, Hi, sorry. Yeah. Sorry, so. Yeah. So I'm currently in my third year of engineering. I'm doing my biotech engineering and I want to pursue my master's in engineering management in the US. So does that count as a stream change or does that, because it's literally called engineering management. So does that count as a stream change? Do I need to,
alter my SOP First in a way? thing- No. So first thing, Amina, can you do it? You can do it 100%. From biotech engineering to engineering management, because it's an open field. This can be pursued by anyone. तो आप कर सकते हो. There may be an additional requirement of an essay, which is a altogether separate thing. उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है. But आप ये 100% कर सकते हैं. You will not face any problem. Great. Thank you so much. Yeah. Chaliye. So thank you. I think we are done with all the questions. If you have any, please ask me. Otherwise, we are done. Thank you so much. So I have asked a question in the chat box. Yes, madam. Why don't you read it loudly? I am not able to locate. क्या question है आपका? पूछिए. My son has the US tourist visa. Okay. Okay, and it will be renewed like it was taken in 2013. So now this year we will renew it, and then it will be renewed till 2033. Got it. So does this have any impact on the applications? Like, is it No. counted favorably, or it doesn't matter? No favoritism. Nothing. It doesn't matter at all. Okay. You will And be he has an uncle in the US. Sorry. His uncle is there in the US. He's a citizen. So is there anything which they can give as a support? No. Not until he becomes the sponsorer of his education. अगर वो उसके sponsorer बनते हैं तो बात अलग है. Otherwise, having an uncle there or a blood relative plus tourist visa, no particular advantage. No impact. Okay. No particular advantage in admission also, and nor in visa process also. Okay. Unless and until वो बच्चे का जन्म वहाँ हुआ है तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी. बाकी otherwise nothing changes. You are as good as any other student who have never. Any other student. Yes. Okay. Thanks. Thank you. Can you just throw some light on sponsorer? I mean, you touched one point now. If somebody becomes a sponsorer. Yeah. So Mrs. Deshpande said that the student's uncle, he is there in US. So there could be a small visa assistance, because if there's somebody in US who has given you a support letter and a sponsorship letter to support your education, then the small help you get is you don't have to show lot of your let's say liquid assets to the visa officer when you are applying for visa, because you have already got a sponsorer who is a US citizen and who is ready to sponsor you. एक वो छोटा सा आपको visa में help मिलेगा. Admission decisions में कोई help नहीं मिलता. He may be or may not be related. He may be or may not be related. Okay. Thank you. Mr. Saraf? Yes. I have a question for you. You mentioned in the session that any student who's doing masters in the US gets a facility of 1 year of work OPT. permit or OPT, or 3 years of OPT, depending upon the employer stroke the type of course he or she is doing, which is perfect. Now, my question to you is that can this be extended after the student finishes MS and goes for a PhD program? Good question. So let's say student completes the MS but has not started on OPT and gets enrolled for a PhD program. So yes, this 3 years, and I'm assuming it is a STEM course. So these 3 years, जैसे carry forward होता है, वो उठ के आगे चले जाता है. It gets carried forward, and आपको PhD के बाद आप वो 3 साल का OPT आपका बना रहेगा. Yes. But let's say student started with the OPT and midway decides to do a PhD. तो कोई balance carry forward नहीं होता है, वो lapse हो गया. Okay. So the perspective is, what I understand is that as long as you don't touch the OPT, okay, you're safe. Okay, perfect. I had asked a question on microbiology. Thank you very much for that. Which country? So we were contemplating US, Germany, or UK. So now you have enlightened us. We are now going to filter it to US and Germany. Okay. Right. We also understand the constraints of Germany. What we'll do is that we will set up a discussion with Mrs. Joshi, and then we'll meet up you in your office. Sure, sir. Look forward. Thank you. Thank you very much, Mr. Saraf. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. So you can, yeah, thank you.